Panel today, as you know, is about startups and strategic partnerships. We have a great lineup of panelists. So thank you all for taking out the time. And thank you to all the attendees. We look forward to receiving a lot of questions. And so a bit of housekeeping, the format will be that we will ask a question and I'll pose a question to the panelists who will have around 5 minutes to answer. And Fawad, Kalia, you're going to be representing the corporate perspective, Mariam, the startups perspective, and Faisal, I understand that you're going to be in the middle ground because you have line of sight on both sides of the table. And so before we go into the introductions, just a little bit about myself. I've been working for 17 years. I started off my career in the corporate sector and mostly in business development. Sadaf, And my first project. Can I request all in Urdu, please? Of course, I will try my best. And I would request all the panelists as well. And I would request all the panelists as well. So just a little bit कि मैंने अपना करियर शुरू किया था कॉर्पोरेट सेक्टर में एंग्रो फूड्स की फीजिबिलिटी उस टाइम पे एंग्रो मिल्क प्रोजेक्ट होता था बिफोर आई शिफ्टेड टू द नॉन प्रॉफिट स्पेस 2010 में एक्यूमेन में मैंने काम किया था व्हिच वर पायनियरिंग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप or this idea of patient capital impact investment. It was very, very new at that time. And most of 2018, 19 and 20 मैंने एक startup किया था non-profit startup in youth employment जो आगे जाके हम बन गए थे पंजाब गवर्नमेंट स्किल्स ट्रेनिंग फंड के टेक्निकल एडवाइजर्स और फिर लाइसेंसीज थे एक McKinsey फाउंडेड नॉन-प्रॉफिट जिसका नाम था जनरेशन यू एम्प्लॉयड. So I would just ask the panelists, please आप अपना introduction करवा दीजिएगा to your organization. आपकी trajectory क्या रही है startup space के अंदर. The order we can follow is Faisal, then Khalia, Fawad, and Mariam. Ji, thank you, Sadaf. So my trajectory, I've got a background in different industries. उसमें एडवर्टाइजिंग शामिल है, टेलीविजन शामिल है, टेलीफोनी शामिल है. मैंने पाकिस्तान में भी काम किया और पाकिस्तान से बाहर भी काम किया और मैंने स्टार्टअप्स भी किए हैं. मैंने खुद जो है बिजनेसेस लॉन्च भी किए हैं. अब कुछ ऐसे थे जैसे NTM था. इंटरफ्लो तो इटसेल्फ वाज सक्सेसफुल, काफी सक्सेसफुल कंपनी थी. आई वाज वन ऑफ द 3 people in that. और उसके बाद जो है NTM हमने लॉन्च किया. पहला टेलीविजन प्राइवेट टेलीविजन इनिशिएटिव था, वो किया. फिर मैं इंग्लैंड गया, वहां पर टीवी एशिया सेटअप किया. वो पहला साउथ एशियन सैटेलाइट टीवी चैनल था. वहां से फिर मैं वापस उसको मैं इसलिए मेंशन करूंगा टीवी एशिया को क्योंकि मेरे पास उस वक्त सिर्फ जो है ना 18,000 पाउंड थे और उससे मैंने टीवी स्टेशन जाके लॉन्च किया था. जी, तो वो टीवी स्टेशन लॉन्च हुआ, वो बहुत सक्सेसफुल रहा और उसमें एग्जिट किया 3 साल के बाद. उस 18,000 को 265,000 पाउंड से एग्जिट किया और अब वो जी यूके के नाम से चलता है बिकॉज दे वर द वंस हु बॉट इट. उसमें पहले भी कुछ इन्वेस्टमेंट थी फ्रॉम द बच्चन ब्रदर्स. सो दे वर अमिताभ वाज a partner. So that is an interesting side of it. उसके बाद वापस मैं पाकिस्तान आया और फिर दोबारा इन्वॉल्व हुआ NTM के साथ till 99. उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया 99 के एंड में. my health was not good, I had some problems and this time मैंने डिसाइड किया कि अच्छा अब टेलीविजन जो है वो ट्रांजिटरी है. बहुत ज़्यादा देर जो है टेलीविजन नहीं होगा, उससे ज़्यादा जो है वो मोबाइल पे चीज़ें होंगी बिकॉज मैं देख रहा था और उसी हिसाब से मैंने फिर अपने आप को अलाइन करना शुरू किया. वो फिर वापस जब मैं वहाँ से आई वेंट टू द US, आई स्टेड देयर फॉर अ व्हाइल. वहाँ से फिर मैं UK गया एंड आई जॉइंड अ कंपनी देयर जो बेसिकली कम्युनिटीज डेवलप कर रही थी ऑन द इंटरनेट. ये .com का ईरा था, 2000 की बात कर रहा हूँ अब. एंड वी ट्राइड टू बिल्ड अ कंपनी और उसमें हमने 3 डिफरेंट इनिशिएटिव्स थे. एशिया फ्री नेट था, we had Middle East Arabic free net and Chinese. So these are the large diaspora communities. So we were able to raise some money. हमने उस कंपनी के लिए 1.6 मिलियन पाउंड्स भी रेज किए. बट वो .com बबल बर्स्ट हुआ तो उसके साथ वो कंपनीज भी नहीं चल पाई. वहां से फिर मैं हचसन में चला गया which is launching 3G telephony.
और मैं हचसन के रहा तकरीबन उनके साथ 2 साल रहा टिल आई वाज आस्क्ड टू कम बैक बाय द जंग ग्रुप। उन्होंने मुझे कहा कि आप पाकिस्तान आए वापस। तो मैंने कहा जी पाकिस्तान में आके क्या करूंगा, मैं टेलीविजन तो कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बताएं आपने करना क्या है। तो मैंने कहा अगर आपका विजन है टू गो डिजिटल फिर मैं आने को तैयार हूँ। तो 2003 में फिर मैं वापस आया और मैंने ज्वाइन किया जंग ग्रुप प्राइमरीली जियो टेलीविजन के लिए। पहला मेरा काम था कि जियो टेलीविजन को मैं इंटरनेशनली जो है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करूँ। तो 2004 में वो कंप्लीट हो गई, यूएस मार्केट में लॉन्च हो गई, यूके में हमने 2005 में लॉन्च किया, मिडल ईस्ट में हमने 2004 में लॉन्च किया, पार्ट्स ऑफ यूरोप में हम लॉन्च कर चुके थे आईपीटीवी पे। वो कंप्लीट हुआ तो देन मैंने फिर जो है ना उनकी डिजिटल साइट को देखना शुरू किया और इन बिटवीन हमने डीटीएच लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया एंड वी वन द लाइसेंस। हमने वो जो टेंडर था वो बिड थी वो हमने विन भी की। अब लेकिन वो हो नहीं पाया फॉर डिफरेंट रीजंस। सो दैट वाज वन ऑफ माय बिग डिसअपॉइंटमेंट्स कि डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग जो है पाकिस्तान में इंडिया से पहले शुरू हो सकती थी। उन दिनों में काफी कॉर्पोरेट्स के साथ बातचीत भी हुई, राइट। सो वन ऑफ द बिग कॉर्पोरेट्स वाज एक्चुअली न्यूज़ कॉर्प जो स्टार का ओनर है, जो टाटा स्काई है अभी। सो वी वर इन डिस्कशंस विद देम फॉर अ जॉइंट वेंचर इन पाकिस्तान, राइट। इसी तरह स्काई और न्यूज़ कॉर्प के साथ काफी एडवांस उसमें डिस्कशंस हुई, लेकिन उस पीरियड में यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी सिक्योरिटी की। तो उनको ये डर था कि हमारे एग्जीक्यूटिव्स नहीं जा पाएंगे पाकिस्तान। कुछ उनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे वो इंडियन ओरिजिन के भी थे, स्पेशली इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो वो इश्यूज की वजह से वो वेंचर जो है वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो ये जर्नी थी और फिर मैं जंग ग्रुप के साथ रहा काफी अर्सा। आई वाज हेड ऑफ स्ट्रैटेजी एंड लुकिंग एट द डिजिटल आल्सो। फिर मैंने आई थिंक 2014 में मैं आई वाज इनवाइटेड टू टेक सम वर्कशॉप्स एट प्लान 9। तो वो मैं वर्कशॉप्स लेने गया, मुझे अभी तक याद है वो कोहॉर्ट 3 था उनका। तो उसमें मुझे 3 कंपनीज ऐसी नजर आई जो मुझे समझ में आई कि इनके साथ स्ट्रेटेजिक फिट है जंग ग्रुप का। एक बुकमी थी जो बस टिकटिंग कर रही थी और सिनेमा। तो जियो हैड जियो फिल्म्स, राइट, वी वर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो इट मेड सेंस। द अदर वाज एक्सगेयर जो डिस्ट्रीब्यूशन में थे, जो स्मार्ट कार कनेक्टेड कार में थे। तो वो दूसरी मुझे नजर आई कि जी इसमें काफी पॉसिबिलिटी है। और तीसरी थी ट्रैवलिंग, राइट, जो रिक्शाज एट दैट टाइम रिक्शाज नहीं कर रहे थे, वो बसेस कर रहे थे। वो भी मुझे समझ में आई कि एज अ स्ट्रेटेजिक फिट, राइट, buses would be a good medium for young group because I had seen Viacom internationally. Viacom, if हमारे पार्टिसिपेंट को शायद ज्यादा ना पता हो उसके बारे में, it is one of the biggest media companies, but they started with outdoor advertising, right? वो outdoor advertising से शुरू हुए थे, just like टर्नर। टर्नर भी जो है वो आउटडोर एडवर्टाइजिंग से उसके वालिद ने शुरू किया था। इट इज टेड टर्नर, जब वो बाद में आया टुक ओवर द कंपनी, तो वो ब्रॉडकास्टिंग की तरफ ले गया और सारी चीजें। आई लेफ्ट, आई वेंट, आई टुक इट बैक टू द जंग ग्रुप। उन्होंने थोड़ा सा कहा अच्छा देखते हैं करते हैं, ये है वो है, नहीं किया। तो फिर मैंने डिसाइड किया अच्छा मैं खुद ही करूंगा। तो मैंने आई क्विट माई जॉब। आई हैड सम मनी सेव्ड अप, राइट। सो मैंने कहा मैं खुद ही इन्वेस्ट करूंगा। तो मैंने वो 3 पहली कंपनियों में इन्वेस्ट किया, राइट। और पटारी में मैं पहले से कर चुका था। पटारी वाज एन आइडिया दैट आई ओरिजिनेटेड एक्चुअली व्हेन आई वाज स्टिल इन द जंग। ठीक है ना, मेरे पास ये 3 लड़के आए थे, दे वर वेरी यंग, दे वर ऑल फ्रॉम जीकी, दे वर वेरी स्मार्ट। उन्होंने कहा कि जी इस तरह एक ओटीटी लॉन्च करना चाहते हैं ड्रामा के लिए। सो आई एक्सप्लेन टू देम कि ड्रामा बड़ा मुश्किल होगा बट वी कैन डू म्यूजिक। So then they agreed, and then we started Pradari. Right? Since then, I've invested in 2 other companies before coming to the NIC. After the NIC, I cannot invest because that would be signaling. Right? So if I invest in one of the startups of NIC, that would be signaling. If I invest in a company outside of NIC, that would be signaling. Right? So yeah, so मेरी ये journey रही है. Absolutely fascinating. Thank you so much for sharing. Ghalia, over to you. Thank you so much, Sadaf. Assalamu alaikum. मेरा नाम गालिया नसीर है। मैं दाऊद हरक्यूलीज ग्रुप में काम करती हूँ और उनकी जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट कंपनी है दाऊद हरक्यूलीज कॉरपोरेशन, जिसकी इन्वेस्टमेंट्स एंग्रो कॉरपोरेशन में भी हैं, मैं उनके लिए काम करती हूँ। मेरा जो मेन काम है वो है दुनिया से
linkages create karna. Daud Hercules has a partnership with the World Economic Forum, where we are committed to improving the state of the world through learning, bringing knowledge back to Pakistan, and showcasing the best of what Pakistan has to offer on a global stage. Ye mera kaam hai. In terms of what my background is, most importantly, I'm a cyclist. I'm also a technical deep sea scuba diver, which means I can dive in shipwrecks. I'm a real champion of removing plastic from our oceans. That's something I feel strongly about. In terms of my professional background, before the dot-com bubble burst, I had just completed my computer science degree from Karachi. फास्ट से मैंने पढ़ा था, और उसके बाद मेरी नौकरियां सक्सेसिवली आईटी स्टार्टअप्स में ही रही हैं पिछले 10-15 साल से। और एक छोटे से 10 लोगों के सॉफ्टवेयर हाउस में मैंने पहले अपनी नौकरी की थी, 8,000 रुपए की मेरी तनख्वाह थी। एंड उसके बाद आई रियलाइज दैट क्लाइंट्स की फंक्शनल रिक्वायरमेंट समझने के लिए एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, तो मैंने IBS से अपना MBA भी किया। उसके बाद दोबारा आई जॉइंड अनदर टेक स्टार्टअप। उस कंपनी का ये, दिस इज 2005, उसी वक्त Pakistan Software Houses Association was taking all of the best up and coming companies in Pakistan to trade shows, to GITEX वगैरह वगैरह। मुझे बड़ा शौक था कि बाहर के मुल्कों में जाएं और पाकिस्तान के बारे में प्रमोट करें all of our amazing talent and services and products, and how globally competitive we were with India and other destinations at that time in 2005-06. So I worked for a systems integrator for a few years. मेरा focus हमेशा से brand building में रहा है. And then I continued in the brand building journey, but for a Pakistani company that listed itself on the stock exchange for BPO services, which is call centers, serving the call centers of the world with thousands of employees. I was working for them in marketing for a few years. Uske baad I went back to doing what I love best, seminars and what I call tambu lagana. I did that for Oracle for the South Asia region, which includes all of the SAARC countries other than India. I was responsible for, just like this, bringing speakers together to talk about the hardware, software, databases, middleware, applications, the business intelligence layer. And then Oracle at that time also did something quite new, which was called a hardware appliance, which is hardware and software engineered to work and optimize together. So I did that for a couple of years in the South Asia region. And uske baad मैंने 1-2 साल full time scuba diving की है. I was living in the Philippines for that. और uske baad I actually got an opportunity at an Oracle partner, a Pakistani partner. And they said we need sales help again in the region. Wahan se I got acquired by the holding company, which was the Daud Group. I was hired by the chairman of the group, Mr. Hussain Daud, to work with him on his dream of building a business school, which is the Karachi School of Business and Leadership. How do we inculcate values and morals of trust? And that journey has brought me to what my current role is. Just a quick background on what the Daud Hercules Group is. We are a 102-year-old company. 100 साल से हम different entrepreneurial ventures में काम कर रहे हैं. अभी हमारी investments हैं, of course, Engro की जो सारे businesses हैं, and Fawad will tell you more about those. हम उनमें हमारी investments हैं. उसके अलावा we have solar, renewables, we've got a wind business, we've got enterprise technology solutions, we've invested in industrial software solutions,
Also, we trade in equities on the stock market. Our group has 9 public listed companies in Pakistan, and mashallah, every year we are one of the top 25 public listed companies because hum logon ki governance is our real strength. So thank you so much. So happy to be here with all of you today. Great stuff. You have some questions around scuba diving in the Q&A section if you want to go to that. Fawad, over to you. By the way, I'm a scuba diver too. I've trained with the Navy, and I've been diving with ships also. Nice. Wow. Assalamu alaikum everyone. जी मेरा नाम फवाद सुमरो है. I work for Engro Foundation. मेरा career जो है वो खासा unadventurous रहा है. As soon as I did my graduation in business studies, I joined Engro, and it's been 20 साल हो गए हैं. मैंने different commercial roles में काम किया है, जिसमें Engro Fertilizer जो कि plant nutrients का business करता है, उसमें मुख्तलिफ roles मैंने I played with different roles. कुछ अर्सा मैंने Engro Polymer में काम किया है, जहाँ पे मैं water conservation technologies in agriculture I was promoting those. पिछले 8 साल से मैं Engro Foundation से वाबस्ता हूँ, और Engro Foundation जो है वो Engro Corporation और उसके affiliates का not for profit platform है. So although we are basically like an NGO, और हम Engro Corporation और उसकी subsidiaries के corporate social responsibility programs को देखते हैं, उसके साथ साथ हम अपने businesses के साथ in their value chains we work with them, और जो corporate social responsibility space में जो evolution हुआ है of working in shared value space, उस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. शेयर्ड वैल्यू से मुराद ये होती है कि ऐसे एरियाज जहाँ पे जो कुछ ऐसा काम किया जाए जो कि सोसाइटी के लिए एट लार्ज अच्छा हो और बिजनेस के लिए भी उसमें फ़ायदा हो. तो उसकी मुख्तलिफ जो है वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस मुख्तलिफ उसकी शक्लें बनती हैं. A quick example would be कि हमारा Engro Foods जो Sadaf also mentioned about जो डेयरी का business है, where we buy milk from smallholder farmers, और हम उसको process करके जो है हमारे brands हैं Allpurs और डेयरी उमंग वगैरह, इनकी जो supply chain है, ये supply chain रोजाना thousands of farmers, particularly smallholder farmers से दूध हम खरीद रहे होते हैं. तो उनके साथ काम करना, फॉर एग्जांपल उनकी कैपेसिटीज डेवलप करना इज क्लासिक शेयर्ड वैल्यू स्पेस, जहाँ पे फार्मर की वेलबींग, इकोनॉमिक, सोशल वेलबींग जो है उसका डायरेक्टली बिजनेस को भी फायदा होता है, बिकॉज अगर फार्मर ज्यादा प्रोड्यूस कर सकेगा तो हमें बेहतर क्वालिटी और बेहतर क्वांटिटी का रॉ मटेरियल मिल सकेगा. शेयर्ड वैल्यू स्पेस अमूमन जो है कंपनी स्पेसिफिक भी होती है, लेकिन बहुत सारी जो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी होती है. तो इन दिस केस फॉर एग्जांपल ये हम नेस्ले के साथ ये शेयर्ड वैल्यू स्पेस शेयर करते हैं. तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने बिजनेस के साथ बैठें फ्रॉम फाउंडेशन पर्सपेक्टिव, और उनके साथ बैठ के शेयर्ड वैल्यू स्पेस को समझें, और वहाँ पे हम ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन करें और इम्प्लीमेंट करें जिससे कि ये दोनों एंड्स पे फायदे हो सके. और इसी सिलसिले में जो है एक हमारा रिलेटिवली रिसेंट एवोल्यूशन जो हुआ है within Engro Foundation, हमने जो है वो impact venturing शुरू की है. This is very much similar to again Sadaf what you said about acumen. Idea again यही है कि shared value space में instead of having grant based projects, क्योंकि grant जो है वो limited होती है, time bound होती है, value creation जो है वो एक sustainable business model के through भी हो सकती है. हम shared value space को देखते हुए उसके साथ साथ revenue का potential देखते हुए हमारी कोशिश ये होती है कि यहाँ पे कोई एक सोशल एंटरप्राइज या इम्पैक्ट वेंचर क्रिएट किया जाए जो कि उस स्पेस में सस्टेनेबली इम्पैक्ट क्रिएट करता रहे. ये थोड़ा हमारे लिए नया जर्नी है, एंड दिस जर्नी हैज पर्टिकुलरली पुट अस इन कांटेक्ट विद स्टार्टअप्स. स्टार्टअप्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन हमारा इन दैट सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एंग्रो एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, तो बहुत सारी वैल्यू चेन्स हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्टार्टअप्स के साथ जो है वो हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड
कि कहाँ पे वैल्यू क्रिएशन हो सकती है जो कि हमारे बिजनेसेस के लिए या इन द इकोसिस्टम ऑफ आवर बिजनेस इट इज बेनिफिशियल. So I'll stop here and thank you very much once again. Thank you. We'll dive deeper into your trajectory of the Anglo Foundation in the next round of questions. Mariam, over to you. Thank you so much, Sadaf. Assalamu alaikum, everyone. मेरा नाम मरियम अर्शद है and I am the founder and director of Impact Dynamics. हम एक छोटी enterprise हैं जो अपना काम जो है we center it around creating custom design entrepreneurial curriculum for incubation centers, for educational institutes for that matter. और हम workshops करते हैं वो भी custom designed होती हैं या वो in-house होती हैं या वो they're open for the public that also center around tech and soft skills. We started working with empathy at workplaces. I have a very interesting background. I started off my journey when I was in university and I worked for a private TV channel where I used to host a lounge show. I still remember, it was very interesting. And then I was asked by the national television to actually, do a couple of shows for them. So starting a career with television and then moving towards marketing because marketing is my passion. I'm a hybrid marketer. My first job was in one of the most renowned universities of Pakistan. It's a private university where I worked as the head of marketing and industrial linkages, hence calling myself a hybrid marketer. And down the road, I was asked by the same institute to deputy chair the business school. So I've been in a great leadership position at a very young age. And then at the same time, it's a private clinic, and being one of the directors, I started representing the family enterprise in the Chamber of Commerce, and later on spearheaded the youth forum of the Chamber of Commerce, and also represented it in the SARC Chamber of Commerce. And that's how dialogue with different industries started happening, working for entrepreneurs. And this is back in 2012, 2013. So that is when my entrepreneurial journey actually started. It took off. And moving on, I was asked by different incubation centers. I still remember Peshawar 2.0, the conversation of Peshawar 2.0 started right in front of me. I still remember Dr. Faisal when he asked me to engage in a conversation on Twitter. And there was little to no concept of incubation center, especially in Khyber Pakhtunkhwa at that point in time. And I think there was probably the nest at that point in time. And then moving on, I was asked by Badr Khushnood, who happened to be the country consultant for Google in Pakistan at that point in time, to start with the Google Business Group for Peshawar. So as of 2016, we are ranked as one of the top 10 chapters in the world. And we've run some great pilot programs like the Women Will, with a focus on leadership, financial inclusion, digital literacy, entrepreneurship. That's how my journey started. I'm part of the founding team of the National Incubation Center, Islamabad, where I happen to work as a community manager. And this is in 2016 when the conversation around the NICs had already started. Very happy to have worked with Zuhair and Pervez for that matter. And then I moved back to my hometown to complete my research. But then, the Kira in me said, "Ke aapne jo hai, you have to do your own thing." And I think it was about time, and I already had a focus. And I'm very passionate about what we're doing. We have partnerships globally as well, in India with Entrepreneur Space, in some other regions. We have actually conducted some international workshops. We have some local and international clients, and we're 2 years strong as a company, working for startups and the corporate sector as well. Fantastic. Thank you so much. Some kind of linkage between media and and startups between you and Faisal. That's really interesting. So let's start with the first question to the panelists. And Mariam, if you could go on mute, there's a bit of feedback. There is this terminology called strategic partnerships, which is somewhat new. Initially, any kind of interaction would be quite one-sided, whether it was a corporate sponsorship or a corporate grant. And there has been this evolution in thought or in strategy.
And so could you comment on how your organization has a partnership style approach? And we can start with Fawad, then go on to Mariam, Ghalia, and close with Faisal. And Fawad, I remember being on the roundtable way back when, before the Engro Foundation had started, and you had made a presentation on looking back at the value chain and kind of seeing how Engro would be able to kind of impact down the value chain. So starting with that vision, pre-Engro Foundation to where you are now, could you tell us a little bit about how partnerships has played a role? Thank you, Sadaf. It's been very interesting journey, and I completely endorse that. Over the years, the term partnership has evolved, and from simple sponsorships or grants or more transactional relationships to more strategic relationships is what corporates are looking at now. हमारे यहाँ although evolution जो है वो takes its time, तो suddenly जो है वो transactional relationships खत्म नहीं हो जाती. So they continue to be there, and so उनमें भी benefit है for a lot of I would say potential startups to interact with large corporations. But जो real value है वो strategic long term relationships में है. So उसमें हमें थोड़ा ये समझना होगा particularly from startups perspective कि ये relationships क्यों अहम हैं, ये partnerships large corporations क्यों करती हैं. So naturally corporations जो हैं वो for profit entities हैं, तो उनका constantly जो है वो एक focus रहता है towards the bottom line. तो उसमें दो तीन जो main points हैं वो ये कि either corporations नई market को access करने की कोशिश करती हैं या जो है वो they're looking for some innovations, and there is a whole theory about के innovations जो हैं वो किस तरह क्या उसके लिए conducive environment कौन सा है, and sourcing innovations from outside is one very effective way of doing it. और तीसरा जो है वो supply chains का for example strengthening है. That is very real and everyday challenges that we face in the course of doing business. So ये और इसके अलावा ज़्यादा जो है वो I would say generic level की भी motivations होती हैं. Sometimes purpose of the organization drives you to go into strategic partnerships or even human resources को attract करना, because millennials are said to be more purpose driven workforce. But those are more abstract, I would say, motivations. I think हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी होगा कि ये partnership की वैल्यू है क्या for a large corporation. So अगर हम कहीं fit in हो सकते हैं into जहाँ पे कि there's a long term relationship, there is a long term strategic value जो कि एक startup या एक supplier create कर सकता है for a large corporation, तो वो relationship बहुत strategic होगी. It will live beyond what is ordinarily a relationship through a grant or sponsorship mechanism, and I think वो समझना जो है बहुत जरूरी है. और उसके लिए I think startups की end पे जो है वो थोड़ा सा एक where I think incubators can play a role also is to analyze industries. जैसे शुरू में भी मैंने introduction में about dairy की value chain के बारे में बात की, तो वो जो challenges हैं supply chain के, they would be true for all dairy companies. Any company जो कि दूध collect करती है खुद से, उसके लिए challenges होंगे. So, वो एक ऐसी space है for example जिसको एक analyze करके active problem solving की तरफ अगर जाया जाए, तो I think ज़्यादा long term strategic partnerships बन सकती हैं. So just a quick follow-up question there. Do you have examples so I can understand that you're looking for innovation or strengthening your supply chain or some kind of HR centered focus, like attraction or strategic edge there? But could you give examples for how the Engro Foundation has done these partnerships? So very quickly मैं आपको example देता हूँ again from dairy industry. हमारे मुल्क में दूध की जो प्रोडक्शन होती है वो सीजनल है. There are seasons. There's a flush season, there's a lean season. Interestingly, ये जानवर की कैपेसिटी नहीं है, ये actually animal feed की availability की वजह से होता है. There are few months when feed is not available. वो एक बड़ा एक long term strategic issue है, और इसको हम अपनी supply chain को strengthen करने के perspective से we always wanted to have some kind of a solution around it. अच्छा, so हमने फिर कुछ बाहर देखा out in the environment, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह का कोई aligned
existing business नहीं मिला, so we had to go into incubation ourselves. So while entity तो हमने incubate की, but उसमें हमारे साथ partners, co-investors for example हैं who share this vision with us. So abhi, so we have a a startup, an impact venture on ground by the name of FeedSol, short for Feed Solutions, जो कि different SKUs में high nutrition animal feed produce करता है. Idea basically यही है कि हमारे जो suppliers हैं, mostly smallholder farmers and medium sized farmers, और our farmers जो कि commercial होने के path पे हैं, उनके अपने जो सप्लाई चेन के इश्यूज हैं उनको अगर हम सॉल्व कर सकें तो ये पूरे सेक्टर के लिए इकोसिस्टम लेवल जो है वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस है. और and that's how we went on this journey, and later on we found a very interesting individual who was running his own somewhat related enterprise, तो उनको फिर हमने जो है वो अपने साथ ज्वाइन कर लिया. So on that's the example that I would quote in terms of very specific problem solving in one's supply chain. And your relationship, of course, needless to say, it's going to continue forever, and as long as we are in the business. Fantastic stuff. So I think a quite clear theme there was that corporates are looking for strategic advantage, either procuring innovation or some kind of strategic edge, which would either give them HR or some kind of supply chain advantages. But Mariam, I mean, over to you in terms of from the startup perspective. What are your expectations if you're looking for from your corporate partner? Thank you, Sadaf. So basically, I strongly believe that strategic partnerships work best जहाँ पे आपकी shared common values होती हैं, आपकी shared core values होती हैं, and because without similar values, of course, a good conversation cannot even start on the table to begin with. Having said that, जब आप strategic partnership की बात करते हैं, तो जो ब्रांड्स या फिर जो कॉर्पोरेट ज़्यादा एक्सेप्टिंग होती हैं या ज़्यादा इनोवेशन सेंटर्ड होती हैं या इनोवेशन फोकस्ड होती हैं, द मोर ओपन टुवर्ड्स अ पार्टनरशिप. आई मीन जहाँ मैं इनोवेशन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक टर्म यूज़ करना चाहती हूँ विच इज़ अपेरेंटली बहुत नया टर्म है. पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता, शायद बहुत कम काम हो रहा है इस पर, जिसको कहा जाता है कमर्शियल इनोवेशन. And commercial innovation, I think, is a key driving force जो आपकी corporates में भी अगर आप change लाना चाहते हैं अपनी product में या फिर अपनी product की outlook में या फिर the way you're even a very conventional product for that matter, अगर आप चाहते हैं कि वो एक different तरीके से sell हो तो वो sell हो सकता है. A great example will be the Tide pen. It's a small pen. एक detergent company है Tide. I'm sure everybody is familiar with that. और उन्होंने create किया है surely on the basis of observation. तो जहाँ पे observation की बात करते हैं, innovation की बात करते हैं, वहाँ पे startups का role आ जाता है, because startups are agile. Startups का role ये होता है to disrupt. This term is often misused, लेकिन बाकी में startups जो हैं उनका role ही ये होता है to change. To bring change and to do things differently. तो strategic partnerships पहली बात तो ये है कि तब काम करेंगी जहाँ पे आपकी core values synced हैं, and वो आपको एक company की outlook से भी पता चल जाएगा how innovative are they and how forward looking are they. And at the same time, when you're trying to form a strategic partnership, it has to be a mutual gain. And as a startup, because a startup is a very small entity in comparison to the giant you're standing in front of, So a startup has to maneuver very, very carefully in these turbulent waters. एक बहुत strategic partnerships, बहुत successful strategic partnerships रही हैं पाकिस्तान में. मैं कुछ quote करना चाहती हूँ यहाँ पे. नादिया पटेल, everybody knows her. Sheops उन्होंने शुरू किया था. Is a platform जहाँ पे जो different खवातीन हैं, they would actually share their products, and then they would get sold. And there was a huge following, and she was picked up by an innovative company like Facebook, because वो Facebook का ही platform इस्तेमाल कर रही थी, और अब FinPro उन्होंने launch किया, जहाँ पे वो trainings provide करती हैं, digital trainings provide करती हैं on how to use Facebook, and it's a very successful partnership with Facebook, जहाँ पे उनको support मिल रही है from Facebook in terms of designing the trainings or even like international visibility.
and coverage. So because a strategic partnership is somewhat of like a long-term contract in comparison to, let's say, a sponsorship for that matter, which is very short-lived. It has to be very carefully curated from both the end of the startup, especially the startup, because they have a lot to lose. They're very small as a company in terms of उनकी credibility stake पे होती है, शायद उनका पहला project हो, because the corporate is a big company, उनको शायद इतना फर्क भी ना पड़े, and at the same time corporates जो हैं वो easily startups को अपने terms and conditions पे challenge भी करते हैं. So a note out to all the startups out there: you have to be very careful, and you should always seek for advice from your advisors if you don't happen to have a mentor, whenever you want to sign a deal with someone, for that matter. So just to interject there, I think the theme quite clearly has been that startups are the little guy. They are innovative perhaps, but they're at a negotiating disadvantage. Have you ever given pushback to a potential funder or partner as the little guy, and how did that go? Actually, multiple times. Sadaf, we're only, as I mentioned, we're only 2 years old, and we're headquartered in Peshawar, which makes things a lot difficult. Or mentioning that, हमारे जो operations हैं, we're running projects in Karachi, Lahore, and also Islamabad for that matter. And it's very hard to get work, especially in a niche, जो आप कहते हैं custom design curriculum, because it's something relatively very new. It's not the run-of-the-mill kind of work that we're doing in the market. So we have been asked to do work at a lesser price, and in order to, because आपको अपनी quality का पता है, it's very hard to say no, but we've actually said no, and we haven't settled for less in terms of the price, because and then we have been paid, for the amount that we asked for. So I think even as a startup, I know they're very trying and testing times. Initially, हर चीज़ बहुत difficult होती है, लेकिन आपको you have to put your foot down. अगर आपको लगता है कि आपका product इतना अच्छा है, और आपकी यहाँ पे बात आती है, आपने market validation की भी है, आपने बाकी में test किया हुआ है, and it can be replicated in different markets across Pakistan, जैसे हमारा model है, it can be worked upon, then you need to put your foot down and do not settle for less. Money does eventually come in. You are creative, you are putting out a good product in the market, पैसे जरूर आएंगे. Fantastic. I love that idea. As long as you do the good work, funding will come. Ghalia, over to you. So as the partnerships guru, so to speak, we've heard from, the startup side of the table, and we've heard, why corporates should do sponsorships. But what do corporates bring to the table? What is it? Why should a startup want to partner with a corporate? Thank you. Just to build on Mariam की जो बात है, आपकी ज़हानत से ज़्यादा आपकी इखलाकियात ज़रूरी हैं when it comes to partnerships. ज़हानत, which is your competencies and skills, you can acquire. आप सीख सकते हैं, आप लोगों से मदद मांग सकते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद, which is how we treat our fellow beings, is really what large corporations look for, especially corporations like ours, which are family controlled holding companies. यानी कि वो ना सिर्फ अपने लिए, लेकिन वो अपनी औलाद और अपनी औलाद की औलाद के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ के जाना चाहते हैं. तो वो जिन पार्टनर्स से गुफ्तगू करते हैं और जिनसे हम सीखना चाहते हैं और जिनसे हम it's रिश्तेदारी, really. It is a family and it is rishtedari, and you really want to pick your relatives कि आप की ikhlaqiyat आपकी मिलते जुलते हों. That is the first and foremost. What do we bring to the table? Other than, so it's, just like Mariam said, money is overrated and funding is overrated, and there is absolutely no shortage of funding available. The question for, the smaller party is the smaller party is bringing ideas and their passion to solve a problem worth solving. उनका
पूरी तरह से कन्विक्शन होता है कि इस प्रॉब्लम को हम इस प्रोटोटाइप से सॉल्व कर सकते हैं. The corporate is looking for a low risk way of supporting this idea and supporting a founder who they trust and they feel कि हमारी family हो सकती है. तो what do we bring? Equity तो हम उसको दे देंगे या वो मांगे तो दे देंगे. लेकिन what we really over the years, and that's the beauty of 80% of businesses in the world are family businesses. खानदान businesses, पायदार businesses चलाते हैं historically. हमारा group 100 साल पुराना group है. But there's also the other flip side. I'll also say that of the top 10 most valuable companies in the world today, 5 of them are first generation founders who started their companies in their 20s, right? Mark Zuckerberg and Jeff Bezos and Larry Page, Google wale sare, right? So that's also a large corporate. There's also a family large corporate. I think they're a little different in their approaches. What does patient multi-generational corporations bring to the table who have a view of a CEO, as an example, has a view of 3 years. ठीक है ना? एक डिपार्टमेंट या बिजनेस यूनिट या ऑपरेटिंग सब्सिडरी के सीईओ का व्यू ऑफ अ पार्टनरशिप वुड बी हम इसको 1 या 2 साल में किस तरह दे सकते हैं. लेकिन जो बोर्ड पे जो लोग बैठे हुए हैं, दे आर going to be staying and rotating on the board for time to come, at least 5 years and more. So what do we bring to the table? How can we support the founder? How can we हम उनको फाइनेंशियल तरीके से किस तरह ज़्यादा तगड़ा कर सकते हैं, हम उनको कैश फ्लो मैनेजमेंट किस तरह सिखा सकते हैं, हाउ कैन वी टीच देम नॉट टू गिव अप एवरीथिंग टू द कंट्रोलिंग पार्टी. फाउंडर के पास कंट्रोल होना अर्ली ऑन बहुत अच्छी बात है, until the founder exits and creates enough value कि एक बड़ी कॉर्पोरेशन, हमारी जैसी कॉर्पोरेशन, हम लोग ग्रोथ कैपिटल लाते हैं. We are constantly advising. So that is how we look at it, as a big brother advisory over a long period of time, hand in hand. Fantastic. I think we hear you in this piece around multi-generational patience that family foundations can have, that perhaps more structured corporates might not be able to offer. But I think, can you give us an example? Like you said, rishtedari ki tarah aap log approach karte ho, mentorship, and could you give a specific example on an organization that has been mentored? So तकरीबन I think 9 साल पहले जब रिन्यूएबल एनर्जी की कोई बात भी नहीं कर रहा था, हमारे बोर्ड ने सोचा कि we have industrial operations. How is it that पूरी दुनिया renewables का सोच रही है और हमने कहीं शुरू भी नहीं किया? So we invested in a solar business. पहले सोचा कि घरों पे सोलर लगाएंगे, फिर वो 2-3 साल नहीं चला, फिर सोचा अच्छा चलो इंडस्ट्रियल को प्रोवाइड करते हैं. We waited 6 years on the board before that company turned profitable. That is an example of patience, because you believe in the idea, and if you are the founder keeps coming back to the board. Board पूछता है मुनाफा कमाया, founder कहता है नहीं कमाया. The board says चलो go and try again. If you fundamentally believe in why you are doing this work, is it a problem really worth solving? क्या दुनिया को इसकी ज़रूरत है? If you are aligned on that, and if you trust each other, the profit will come, and when it comes, it will come in large increments. That's very unique indeed, because I've heard examples of people saying that if it's not profitable in a year, take that idea out back and shoot it. And so that's quite remarkable. Faisal, I would ask you to please close on your take on everything you've heard so far. जी सदफ, so 2 हिस्से हैं, स्ट्रेटेजिक और पार्टनरशिप.
तो स्ट्रेटेजिक का मतलब है कि जी आपका लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी मेरे पास ये मैंने 500 पीस बनाए हुए हैं, आज ही आज बेचने हैं, तो मैं किसी कॉर्पोरेट के पास चला जाऊं और कहूं कि जी मैंने ये बेचने हैं, आप बताइए कि मैं आपके सेल्स चैनल्स के थ्रू ये बेच सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेटेजिक नहीं है, वो टैक्टिकल हो सकता है, वो वन टाइम हो सकता है। स्ट्रेटेजिक का मतलब यही है कि आपने लंबा सोचना है। लाहौर में उसको हम कहते हैं ढील का पेच, ठीक है ना। अब तो खैर बसंत खत्म हो चुकी है, लेकिन ढील का पेच आपने जल्दी नहीं करनी, आपने कंसिडर्ड डिसीजन लेनी है। इस पार्टनरशिप का मुझे लॉन्ग टर्म फायदा क्या है, मैं एक स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि मुझे लॉन्ग टर्म फायदा क्या है। तो नॉर्मली जो है वो सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो होता है रूट टू मार्केट का, कि मेरे पास एक क्विक रूट टू मार्केट आता है जो लॉन्ग टर्म चल सकता है। एग्जाम्पल ये है कि हमारा एक स्टार्टअप है, वो लेट्स से एक प्रोडक्ट बना रहा है जो कन्वीनियंस स्टोर्स में जाना चाहिए, जो दुकान में जाना चाहिए, शेल्फ पे जाना चाहिए। अब पीएसओ के साथ अगर बात होती है और पीएसओ के साथ एक पार्टनरशिप होती है, तो पीएसओ हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कन्वीनियंस स्टोर्स, ठीक है ना। उनके पूरे मुल्क में उनके कन्वीनियंस स्टोर है, हर पेट्रोल पंप पे उनके एक कन्वीनियंस स्टोर है। अगर आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है पीएसओ के साथ, वो एक्सेप्ट करता है और वो अपने शेल्फ्स पे आपको प्लेस करता है, दैट इज द पार्टनरशिप टू हैव। इसी तरह शुरू में बात हुई नेस्ले की, और नेस्ले के साथ बात हुई कि जी हमारा एक स्टार्टअप था ट्रैश मस्ती के नाम से, और नेस्ले का एक इनोवेशन का प्रोग्राम था, उनका एक ग्लोबल इनोवेशन प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो उसमें वो स्टार्टअप जो है हमने उनको इंट्रोड्यूस किया और नेस्ले के साथ उन्होंने एक पायलट किया। उन्होंने तकरीबन 500 केजीज जो है इस्तेमाल हुआ चाय की पत्ती उन्होंने ली, उसका उन्होंने हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर बनाया, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। अब बात यह है कि वो स्केल अप होता है नहीं होता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टेप ऑल्सो। कोशिश यही होनी चाहिए कि स्केलेबिलिटी हो। इसी तरह हमने एक अपना और स्टार्टअप जो एआई पे काम कर रहा था, फोटो विजन प्रोसेसिंग पे काम कर रहा था, उनको पीएसओ के साथ इंट्रोड्यूस किया था। पीएसओ को मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जब आप इंक्यूबेशन सेंटर के लेंस से देखते हैं ना, तो आपको बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। मेरे पास एक्चुअली एक रिक्वेस्ट आई थी, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, कि पीएसओ जो है अपनी ऑफ साइट मीटिंग करना चाह रहा था 3 दिन के लिए, और वो लाहौर आना चाह रहे थे। उनका टोटल जो सीनियर मैनेजमेंट थी, उनके चेयरमैन, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके सारे सीनियर डायरेक्टर्स, उनके जो है ना डिपार्टमेंटल हेड्स, एचआर का भी, सेल्स का भी, मार्केटिंग का भी, उन सब ने 3 दिन के लिए ऑफ साइट मीटिंग के लिए आना था लाहौर। तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई कि जी हम ये अपनी ऑफ साइट मीटिंग जो है हम एनआईसी में करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन है तो हमारे बड़ा प्रॉब्लम है, पेपरा रूल्स हैं, ये है वो है, उसकी वजह से हमें शायद इजाजत ना मिले कि आपको हम पे कर सकें। सो आई टुक अबाउट हाफ अ सेकंड टू से यस। मैंने सोचा कि इसका फायदा क्या हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, अब 3 दिन के लिए हम इनसे 3 लाख ले लेंगे, 5 लाख ले लेंगे, दैट्स इट मैक्सिमम। मैंने कहा नहीं, हमारे जो स्टार्टअप्स बैठे हुए ना उनको बहुत फायदा हो सकता है। मैंने उनसे कहा कि जी ठीक है, आप आए, हम आपको 3 दिन जो है वो देंगे, उसका एक्सेस देंगे जगह का, एक शर्त पे कि पहले दिन जो है आपने 3.5 घंटे हमारा एक वर्कशॉप सफर करना पड़ेगा। हम एक वर्कशॉप डिजाइन करेंगे ऑन प्रॉब्लम डिस्कवरी, और वो पूरी आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट है उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेगी, और उसमें हमारे स्टार्टअप्स भी शामिल होंगे। सो दे एग्रीड। So we had that workshop and 5 of our startups were in that workshop. वहां से कॉन्वर्सेशन उनकी शुरू हो गई। अब एक की उस स्टेज तक पहुंच गई, द मोरलेस जो है वो फाइनलाइजेशन पे थी। अनफॉर्चुनेटली द पर्सन ही वाज डीलिंग विद, ही मूव्ड ऑन, राइट, ही रिटायर्ड। अब दोबारा से उसकी कॉन्वर्सेशन शुरू होनी पड़ी। सो स्टार्टअप कैन बी पेशेंस बहुत जरूरी है। आई हैव टू मेंशन है एक और इंस्टेंस। हमारा एक स्टार्टअप था पिछले कोहॉर्ट में जो होम ब्यूटी वर्कर्स के बिजनेस में काम करना चाह रहा था। अब एक दो दफा हम उसको कह चुके थे कि तुम्हारा मॉडल जो है उसको तुम्हें देखने की जरूरत है, जो तुम बात करते हो, ठीक है ना, वो मॉडल जो है वो टेनेबल नहीं है और उसमें आंसर है एक्सप्लॉयटेशन का। एंड देन गालिया केम वन डे। गालिया आई अपनी टीम, आई एम श्योर गालिया रिमेंबर्स। और क्योंकि वी वर लुकिंग कि जी हम मैच मेकिंग करें, तो उनको वो मिलवाया गया। जब उस फाउंडर ने अपनी पिच की और उसने पिच में बताया कि जी मैं ये मेरा मॉडल है और ये हम कमीशन देंगे, और ये, तो गालिया's response was immediate. He said, "You are so exploitive. Why will anybody want to work with you?" उस मीटिंग के बाद
we gave him one chance, and then we decided to drop him from the program. We actually dropped him from the program, right, based on the conversation he had had with Khalia. That was the last straw for us कि नहीं, ये कहीं नहीं जाने लगा. तो कॉर्पोरेट्स के साथ मैच मेकिंग बहुत जरूरी है. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में मैच मेकिंग जो होती है वो क्रिटिकल होती है. आपने एक इनिशिएटर ढूंढना होता है इन एवरी कॉर्पोरेट कि वो इनिशिएटर कौन होगा. वो नेसेसरली जो है मैनेजिंग डायरेक्टर या बोर्ड का चेयरमैन नहीं होता, ठीक है ना. वो कई दफा एक ब्रांड मैनेजर होता है, एक सीनियर ब्रांड मैनेजर होता है, जिसकी अपनी एक कोई प्रॉब्लम होती है जो वो सॉल्व करना चाह रहा है, और आपका स्टार्टअप जो है वो उसी सोल्यूशन पे काम कर रहा है. तो वहां आप मैच मेक करते हैं. जो मैंने बताया कि फोटो विजन प्रोसेसिंग, उनकी बात ये थी कि वो डेवलप कर रहे थे क्योंकि वो एक्सपर्ट्स थे फोटो विजन प्रोसेसिंग में. तो हमने उनको कहा कि आप फोर कोर्ट पे काम करें, जो पेट्रोल पंप्स के फोर कोर्ट्स हैं उसमें आप इंस्टॉलेशंस करें, और जो गाड़ी आती है टू फिल अप, ठीक है ना, उसका जो है नंबर प्लेट ही आपके पास आ जाए तो एक डेटा ट्रेल बननी शुरू हो जाती है और वहां से काम शुरू होता है. तो इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू टॉक टू पीएसओ टू ट्राई टू गेट देम इनटू अ पार्टनरशिप. इसी तरह टोटल पार्को, राइट, वी ऑल नो इट्स अनदर ऑयल मार्केटिंग कंपनी, and we did a small program with the Total Parco, जिसमें we helped them select startups from Pakistan for their international program. उनका एक international program था Starter Upper के नाम से. That partnership also went very well. So inshallah we'll be doing more work with them in the future also. आजकल हम Samsung के साथ कर रहे हैं. We've signed up. Samsung came to us और उन्होंने कहा कि जी हम involve होना चाह रहे हैं in the startup ecosystem, right? And Samsung Korea जो है उनका head office, they were very interested. So we designed a whole concept for them कि जी आप आए, we will select a special cohort of 5 to 7 companies, और वो 5 से 7 companies जो हैं वो Samsung technologies use करेंगी to solve the problem that they've identified. So that program, that MOU has been signed and all that. It is right now on pause because of COVID-19, but post COVID-19 we intend to do that, and this will probably pan out to be a very large program, long engagement. उसमें transfer of knowledge and technology भी होगा, because that is our interest कि जी कोरिया के साथ एक relationship बने, Samsung City से relationship बने, तो वो है. Unilever के साथ हमने कुछ काम किया है. Unilever now, you know, one of their senior people, he comes to every investor summit, right? And we keep sharing information with them also कि ये startups हैं इस वक्त, this is what they can do, because large corporates also need innovation within them, right? I've seen that all my life, क्योंकि मैं advertising में था तो हम बहुत सी चीजें देखते थे. मुझे अभी तक याद है, I think 87, 88 में Unilever जो normally जो है बड़ी conservative किस्म की advertising करता था. Then somebody sat down at Unilever one day and they hired a small creative firm. उन्होंने उनके लिए principles design किए. So we heard something called Abga. Abga was Unilever principle for great advertising, right? और सारी उन्होंने सब कुछ बदल दिया. उसके consequence में आप सर्फ के commercials देखते हैं कि दाग तो अच्छे होते हैं. पहले Unilever कभी नहीं कहता था कि दाग अच्छे होते हैं. वो कहते थे हमारा सर्फ बहुत अच्छा है. अब वो कहते हैं दाग तो अच्छे होते हैं. ठीक है ना. तो ये इस किस्म की पार्टनरशिप, एंड बिकॉज आई वर्क विद कॉर्पोरेट्स, मैंने काफी कॉर्पोरेट के साथ काम किया. आई वर्क विद एग्रो आल्सो. एक्चुअली आई वर्क इन एग्रो आल्सो, जब ये एक्सॉन केमिकल था, और बाद में मैंने एग्रो का अकाउंट जो है, एक्सॉन केमिकल्स का अकाउंट भी मैंने मैनेज किया, एग्रो फर्टिलाइजर का अकाउंट मैनेज किया. सो एक पर्सपेक्टिव है कि जी एक शॉर्ट टर्म टैक्टिकल पर्सपेक्टिव होता है, एक स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है. तो हम स्टार्टअप से यही कहते हैं, स्टार्टअप फाउंडर से यही कहते हैं कि आप हमेशा जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव को देख के चलिए. टैक्टिक्स उसका एक हिस्सा होता है. और एक तो देखें, अगर मैं एक कंपनी में एंग्रो फाउंडेशन के साथ काम करता हूँ, ठीक है ना, मेरे पास एक सोल्यूशन है फार्मर्स के लिए. जो बात हो रही थी, फवाद जो बता रहे थे कि जी एक वो पीरियड आता है जब एनिमल फीड अवेलेबल नहीं होती है, गैप होता है, राइट. उस गैप को फुलफिल करना है. एक तो ऑप्शन ये है कि जी एग्रो जाए, खुद कंपनी बनाए, उस कंपनी को ग्रो करे. एक ये है कि कोई सोल्यूशन लेके आए, राइट, और वो सोल्यूशन के साथ वो पार्टनर करें. तो यूनिलीवर अगेन वी सॉ देम डू दैट. दे एक्चुअली क्रिएटेड अ सेपरेट कंपनी. उन्होंने एक कंपनी बना दी मंचीज के नाम से, और मंचीज में लीवर के लोग नहीं काम कर रहे. उन्होंने उसके बाद स्काउट किया फॉर फाउंडर्स कि जी उस कंपनी को चलाएं. इन्वेस्टमेंट यूनिलीवर ने की हुई है, और वो कंपनी, वो फाउंडर्स जो हैं उनको उन्होंने हैंड ओवर किया है.
वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं। तो इस किस्म की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, बाहर तो बहुत होती रहती है, ठीक है ना। हमारी नीड है यहाँ पर, गालिया ने कहा कि पैसे की कमी नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ फंडिंग अवेलेबल। मुझे याद है गालिया से बाद में मेरी मुलाकात हुई, इनके कॉलीग आए थे पहले, उन्होंने मुझे आके कहा कि जी मैं दाऊद हरकुलिस से हूँ, हमारे पास 22 बिलियन फ्री कैश पड़ा हुआ है और हमने नई कोई फैक्ट्री नहीं लगानी जी। तो हम चाहते हैं कि हम इनोवेशन में इन्वेस्ट करें, इकोसिस्टम जो है उसको हम फ्यूल करें कि ज्यादा लोग जो है वो ज्यादा क्रिएटिवली सोचें, इनोवेटिव सोल्यूशन सोचें, स्केलेबल सोल्यूशन सोचें, टेक बेस्ड सोल्यूशन सोचें। सो कॉर्पोरेट्स आर आल्सो थिंकिंग दैट वे एंड स्टार्टअप्स नीड टू बी रेडी फॉर दैट। आपको तैयारी करनी, सबसे बड़ी चीज आपकी जो है ना वो आपकी रिसर्च है। अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हैं तो सबसे पहला काम आपने रिसर्च करना है। आपने रिसर्च करना है कि दाऊद हरकुलिस जो है वो क्या है, दाऊद हरकुलिस की बैकग्राउंड क्या है, उनके बिजनेसेस क्या हैं, कौन से बिजनेस के साथ मैं मुंसलिक हो सकता हूँ। क्योंकि देखिए ग्रांट जो है, जैसे आपने शुरू में भी कहा, ग्रांट जो है वो टाइम बाउंड होता है, एक पीरियड होता है उसका ग्रांट का। यस, इट्स गुड मनी, फ्री मनी, बट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, विद अ लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर्स, अ लॉट ऑफ रिपोर्टिंग आफ्टरवर्ड, वो सारी चीजें होती हैं। कॉर्पोरेट के साथ रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आपको मिलती है, देयर इज नथिंग बेटर। आप खुद सोचें, अगर जो मैंने एग्जांपल दिया आपको एंग्रो का, इसी तरह फातिमा फातिमा ग्रुप जो है वो हमारे पार्टनर्स हैं एनआईसी में। मेरी अली मुख्तार से बात होती रहती है और इस दफा हमने बात भी की है कि हम सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में एक स्पेशल कोहोर्ट लॉन्च करेंगे, एक स्पेशल चैलेंज लॉन्च करेंगे, जिसमें एग्री टेक के स्टार्टअप्स जो है ना उनको हम इनकरेज करेंगे वो आए। और उनके लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव ये होगा कि फातिमा विल पोटेंशियली पार्टनर विद दैम। जो उसमें से सक्सेसफुल होती है, फातिमा विल पार्टनर विद दैम। नाउ फातिमा हैज अ large database of farmers, they have access to farmers, so they have market access। वो market access critical होता है। For a startup to build market access takes a lot of money। If you get a partner who gives you that market access, that you're flying। If you have the right product for that right market, जो product market fit कहते हैं, तो उसमें के बाद आपको जो है बहुत जल्दी, बहुत स्केलेबल, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे आप जा सकते हैं। तो हम पार्टनरशिप्स को उस पैराए से देखते हैं कि जी कहाँ पर कौन सी चीज जो है वो किस फाउंडर के लिए, किस स्टार्टअप के लिए और किस कॉर्पोरेट के साथ वो मैच होती है। Fantastic stuff. Thank you so much for giving that bird's eye overview. That was very, very useful. We're going to be getting more into specifics now. And I think I would encourage all the panelists to be very concrete in terms of initiatives, numbers, metrics that you have seen. And so the next section, I think I'd like to talk about, the big why. I mean, it's all good and creative, can bring about world peace and the betterment of mankind. But how exactly are we measuring that? What is the advantage that the corporate is getting? What is the specific advantage that startups would be getting? And then also really touch upon successes and failures of current partnerships and the current model. And the idea is not to perhaps criticize, but these are always kind of these typical criticisms somehow exist in dark corners, and to bring them to light. Things like high admin costs or administrative burden, or let's talk about things like PR costs versus the actual investment size or the giving out size. And so, I would ask Ghalia if you could go first and please give us the comment from your organization's perspective. ग्रेट, बहुत शुक्रिया सदफ। I'll try कि जितना रियल हो सके उतना हो। So everything in a corporate gets driven from what is our focus, ठीक है ना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत डिफरेंट फोकस रहा है ओवर द इयर्स। पहले हम लोग फैक्ट्रियाँ लगाते थे और इंडस्ट्रियल एसेट्स को एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाते थे। अब हमने रियलाइज़ किया है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा उसकी यंग टैलेंटेड पॉपुलेशन है, और
यानी कि हमें सर्विसेज की तरफ अपनी तवज्जो देनी पड़ेगी। सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज? अभी आप देख लें, मैं कोविड का आप टाइम देख लें, हम लोग देख रहे थे कि व्हाट सेक्टर्स दुनिया में, all the different sectors, which sector is growing at this time? It is not IT, but within the IT sector specifically, software platforms are growing. Software platforms kahan se aate hain? People make software platforms, which means that we need to focus and have every single goal that we are trying to achieve in a partnership has to be towards services, people, at scale, making software that the world needs. तो हमारा ये इस वक्त फोकस है, और we are going to start small. हम लोग दो तरीके होते हैं, right? You can go and do a big acquisition to acquire knowledge. आपके पास कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज ही नहीं है तो आप नॉलेज एक्वायर कर लें। अगर आपके पास आपने एक छोटी सी टीम कहीं से ढूंढ ली है, आप छोटे काम से स्टार्ट करें, और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, मार्केटिंग वगैरह वगैरह एब्सोल्यूट बूटस्ट्रैपिंग, बिल्कुल कम से कम, मिनिमम से मिनिमम। इवन आपकी 2 साल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में एक मैच्योर प्रोडक्ट, if you're developing an artificial intelligence or a machine learning product, it takes 2 years for it to get intelligent and to be deployed at a customer side. Stay lean and follow all the principles. Can you give examples? I'm so sorry to cut you, but could you give examples? How many tech startups has South Hercules invested in so far? So we are looking at this space. We're exploring it actively. Our group has a homegrown industrial Internet of Things business, which is focused on providing efficiencies for large industries. It's by homegrown. Great. So by homegrown, do you mean it's the Hercules initiative, or have you invested in a startup? No, it's homegrown. It's organic. It was not an acquisition. Yeah. So it's a South Hercules initiative. So far you want to do investments in tech, but there haven't been any other than perhaps an internal expansion. What has South Hercules done in this space so far in terms of numbers? In terms of numbers, so we have, of course, we have an enterprise solutions company in Pakistan, which mostly serves very large systems integration contracts in Pakistan's public sector. But more and more, what we are looking to explore going forward is how do we get people to acquire the skills that they need to provide services for software exports. ठीक है ना? So this is some kind of capacity building. Got it. हम लोग इस हेडस्पेस में हैं कि पॉकेट्स में जो हमारी एक्सेलेंस है पाकिस्तान में, इतना अच्छा काम छोटे स्पॉट्स में हो रहा है, but where are our thousands and tens of thousands of technology campuses? So we would, as a large group, always think of that vision of developing talent, skill at scale. Fantastic. Hear you loud and clear that the future vision is going to be tech, startups, IT, and capacity building, it seems. But looking back, what has, Faisal mentioned this giant pot of cash that South Hercules has. And so where has that gone and how has that been used to date? Oh, it's just parked. It's just parked in equities right now. Equities with which sectors or which kind of? In the stock market. In the stock market. It's just safely parked. Okay. All right. But in the startup space, I would leave you and I can come back. Get it out of equity, start investing in startups. Yeah, I think that's what I was getting at. Because we're talking about... what I can definitely share is that our board has created a philosophy for investment. And this, I think, is going to take us forward for the next many years to come, inshallah. We are only investing in businesses that are entrepreneurial. यानी कि एक नई चीज हरकत और पैशन से शुरू करें, entrepreneurial हो. Number 2, जैसे हमने सोलर बिजनेस 10 साल पहले शुरू किया था जब और कोई नहीं कर रहा था, entrepreneurial हो. दूसरी चीज,
it has to be outward looking. Dunya ko, can we export from Pakistan? Can we be globally competitive? That it has to check that box. All great things, and we wish you all the best. And disruptive. It cannot be an ordinary solution to a big problem. It has to be a exponentially disruptive solution to a meaningful problem. And number 4, we will invest in something that is a growth business, not an early stage business. So this is where we are at. But growth and not early stage essentially rules up all startups. And so I think perhaps the vision might not be aligned with startups, which is unfortunate. And perhaps that's something that you can take back. It would have been useful to get more specifics. And if you want to come back at the end of this panel, there are 5 or 10 minutes for specifics if you should want to share them or gather them in the meantime. Mariam, I would like to kind of over to you. One of the criticisms of startups could be that they are disorganized, they're entrepreneurial, they're mercurial, they don't really know, what they're doing. Have you seen that? Have you seen that happen with either your own organization or others around you? Absolutely. I have seen this happen around myself and also with my own organization. But then my argument to that will be कि जब आप startup के साथ काम करते हैं, you need to come with an open mind. And when I say you need to come up with an open mind, you need to understand that you also have to be, you have to be able to take risks. You should be taking risks because they're coming up with a very different idea on board. And जब एक startup ने, क्योंकि आप अगर ट्रायल एंड एरर की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर स्टार्टअप का जो केस हो वहां पे A/B टेस्टिंग हो या फिर टेस्टिंग पॉसिबल हो. मार्केट वैलिडेशन के और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. But if a startup is starting off and they might need to acquire a few customers, big customers for that matter, they're coming to you, and अगर उनका product आपको appeal करता है, and as a company you're looking for innovation, you should definitely go ahead with that. But talking about challenges. But just to pause you right there, somebody has money and they want to invest. And I can understand from the startup perspective, you want all the leeway in the world, but what's going to be in it for the person investing in you? Why should they give you or take a chance on a startup? What is it that they're going to get back in return? Okay. So I think companies get a lot back in return because it's if you have a very different idea and it is going to generate, it's going to completely change your game as a company. When I say completely change your game, for example, innovation is what comes into perspective over here. If you are looking at long-term gains and you have seen कि वहाँ पे pilot testing हो चुकी है and it can actually work, I strongly believe that that idea can take a company to heights, to great heights. And there's some very great international examples for that. A lot of smaller products have been acquired by big tech companies for that matter because वो इतना उनके लिए long term में बहुत अच्छा था. इतने सारे products की acquisition हुई है because जैसे Facebook ने acquire किए, Facebook ने WhatsApp acquire किया, they have Instagram with them now. Because, but how many of those have come out of Pakistan? I think one of the criticisms of the Pakistan startup industry is that we haven't had success like WhatsApp or Facebook. And so I'm not sure that exactly would apply. Yeah, thank you. That's a brilliant question. I'm so glad you asked me this question. We are being very hard on our market. Let's be very honest. I mean, look at our market dynamics. Let's be very honest that we are in a very nascent stage. हमारा जो ecosystem है वो evolve हो रहा है. We're probably 10 times behind India, which is our neighbor at this point in time, because it started off like a long time back on this journey. We've started off and we're not doing bad. Just take a look at Kareem. One of a Pakistani person is there's so many other international startups for that matter. I'd like to quote Markhor over here. Sidra and Qasim, they happen to be from Pakistan, जिन्होंने Markhor वहाँ पे Y Combinator में पहले incubate हुए, उसके बाद उन्होंने Atoms
एक जो शू वेयर है वो डिजाइन किया, जो एक नीश है जो क्वार्टर साइजेस में जूते बनाते हैं, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वहाँ पे आप प्री ऑर्डर करते हैं जिससे उसकी हाइप भी और क्रिएट हुई, एंड they're featured in Forbes left and right everywhere. ये सारे पाकिस्तानीज हैं who are doing really well for that matter. So I wouldn't be very hard on our ecosystem right now. Let's be honest, कितने हमारे पास investors हैं, investments के लिए भी हमारे जो startups हैं उनकी pitches पे काम होना बहुत बहुत जरूरी है, because they don't even know how to pitch for that matter. So I think altogether हमारा ecosystem is in a very very nascent stage, and we're very hard जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे तो कोई unicorn नहीं है या किसी ने इतनी बड़ी investment नहीं raise की या फिर कोई completely एक different चीज नहीं innovate की. It takes time. Fantastic. So what I'm hearing is that there are some challenges which could be startup capacity building, the ecosystem, the policies, the investors, are not quite there in terms of fostering this startup space. And perhaps we have heard echoes of that from the corporate side of the table as well. So kind of moving on to Fawad. So Fawad, from your side, how many companies has the Engro Foundation invested in? How many companies does Engro Foundation have strategic partnerships with? What have been your returns so far? So as of now, तो हमारे लिए interaction with startups is something very new, and so I wouldn't say कि एक बहुत पुराना जर्नी है. Naturally हर organization एक अपना evolution जो है वो से गुजरती है. तो हमारे लिए impact venturing का evolution is something recent. So I don't have too many examples, but I can I'll comment on this the why part. Why part is very clear. I mean, we're looking at strategic value, both in terms of solving a problem and creating, solving some of the long-term challenges within our, for example, businesses' existing value chains. देखिए, एक डिस्टिंक्शन हमें ये करनी होगी कि एक होता है जो कि कॉर्पोरेशंस एज इन्वेस्टर जब आते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ देयर पोर्टफोलियो, उसकी कंसिडरेशंस विल बी डिफरेंट. वहाँ पे जो है वो risk returns alone would determine, idea is to diversify. But एक जो important relationship है वो ये है जहाँ पे strategic value existing businesses में create करनी है. वहाँ पे value chain की knowledge और वो जो strategic fit का होना वो बहुत जरूरी है. Outcomes हम measure करते हैं. Impact notoriously is difficult, particularly in the impact space. अगर हम social impact की बात करें, there are methodologies around it. लेकिन जो अमूमन जो KPIs वगैरह होते हैं in these kind of relationships would be around those outputs. So वो बड़े specific होते हैं. I think ये figure out करना. Just to pause you, Mariam, could you go and mute this feedback coming from your mic? Sorry, Fawad, back to you. No worries. So जो हर प्रॉब्लम की नोयत जो है वो डिटरमिन करेगी कि कॉर्पोरेशन या जो बिगर पार्टी इन द डील जो है उसकी एक्सपेरिमेंटेशन का लेवल क्या होगा. अगर ये वो चीज जिस मरियम रेफर कर रही थी, अगर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली जो है वो नेचर ऑफ नेगोशिएशन एंड जो स्पिरिट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन वुड बी डिफरेंट. बट अगर कोई बिल्कुल ही ग्रीन स्पेस है जहाँ पे अभी आइडिया की वैलिडेशन जो है वो नहीं हुई तो वहाँ पे नेचुरली जो है पार्टनरशिप वुड बी मोर एक्सपेरिमेंटल. आई वुड से वहाँ पे थोड़े जो है वो डायनेमिक्स would be slightly different. I can quote an example कि जैसे हमारा जब when we were incubating Feedsol, तो product wise हमारी कंपनी जो है ये हमारा वेंचर जो इम्पैक्ट वेंचर ये कोई बहुत इनोवेटिव नहीं है. I mean इसकी प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में ऑल लोगों के पास भी हैं. I think हमारी जो इम्पैक्ट क्रिएशन का जो मॉडल है it comes out of distribution model. वहाँ पे उस एंड पे हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं. We are hopeful that we'll be able to achieve our objectives. हम similarly एक और स्पेस में इस वक्त हम ट्राइंग टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज और वो है प्लास्टिक्स रिसाइकलिंग. सो और वो इंटरेस्टिंगली इंटरेक्शन शुरू ही हुआ इस तरह था कि हम एक अवार्ड करते हैं एवरी ईयर, आई एम द चेंज इम्पैक्ट अवार्ड. उसमें वी रिकॉग्नाइज सम सोशल एंटरप्राइजेस. सो उस सिलसिले में वी वर डूइंग अ रोड शो एंड वी वेंट टू NICs. So we came across some very interesting startups. And so that conversation evolved into, a thematic intervention in our PVC business. And plastic recycling को हमने फिर देखना शुरू किया. And वहाँ पे फिर now we are at a conclusion that, we are ready to,
potentially invest in startups which meet our criteria, internal criteria that we have developed in terms of the problem that it is solving and the business model that it has and kind of returns it potentially can generate in a specific time frame. So, lekin, I must say that I'll kind of echo again what Mariam said, that that space is at a nascent stage. What appeared as potentially worthy investments, when you dig it deeper, I think there were questions that need to be answered first before actually a large corporation like Anglo Polymer could put money into those ventures. So I think evolutionary में अभी भी जो है वो there is a gap. थोड़ा सा time लगेगा मेरा ख्याल है ecosystem को startup ecosystem को evolve करने में till the time that conservative organizations like Anglo, because we are old school, we are not tech companies, हमारी appetite जो है वो slightly different. Agriculture and these are among the least techy stuff, and but there are some real problems to be solved, and these are important parts of our economy. So उसमें थोड़ा अभी I feel कि gap है, और ये I think will be and that would determine nature of successes and failures also. I mean, just to kind of, so many things that are coming out. Just because it's agri doesn't mean it doesn't have to be innovative. But what have been the returns on feed salt so far? So we are at early stage abhi bhi, so हमारे returns अभी generate नहीं हुए. But from what we have projections जो हमारी हैं in our 5-year business plan, they're pretty good. I mean, they're well, I mean, I can't disclose exactly हमारे projections क्या हैं, but they are attractive enough for us to we've been easily attracting co-investors in the project. Okay, so right now no returns. You're in year 1? It's year 2 actually. You're in year 2 and you're planning to start making profits in 5 years? No, it's before that. So our 5-year plans show profits. Yeah. Okay. 5 years to show profits is quite long, so I suppose. But what I'm understanding is that Daud Hercules and Engro are a little risk averse when it comes to gambling on high risk initial stage startups, but there have been some kind of projects, like you mentioned, I Am the Change. And now you mentioned road shows to discuss or promote I Am the Change. And that kind of touches on a very common criticism of corporate, not just philanthropy, but corporate strategic partnerships as well, which is, the PR cost often, and NPR is like a bad term perhaps, but the cost to kind of promote it and bring the word out there of what you've done versus the actual cost of what's actually given to other entities. And somehow with large corporations, it's either at par or sometimes even bigger. And what would be your comment on that? So I agree with that. What you're saying, I mean, a lot of corporations have done this kind of a thing in the past. Lekin I must appreciate, I mean, places like NIC, Lahore and other NICs also, other incubators as well. I think that aggregation has helped us a lot in terms of making an outreach. देखिए हमें ये acknowledge करना पड़ेगा कि ये दो अलग universes हैं. हम लोग एक अपनी अलग दुनिया में रहते हैं. Startups is a different world. We need to create these channels of communication. Outreach is I think is a real life problem for us right now at both ends. And I think उसमें अगर हम if we invest a little bit in these communication channels, there's actually no harm. We need to understand each other better for these partnerships to eventually evolve into long-term relationships. But yeah, I mean, internally तो हमारे यहाँ काफी जो है वो बहस होती है कि कितना जो है हम invest करें in the PR part of it and कितना जो है actual value creation होगी. So that I think is an ongoing debate. Each organization का equilibrium अलग है, and that comes from those short-term and long-term considerations जो हर organization की होती हैं. And would you be comfortable sharing what is the ratio right now between PR to value creation?
सो देखिए, हमारे जो आई एम द चेंज इम्पैक्ट अवार्ड है, इसके लिए हमने रोड शोज किए थे। तो उसमें हम दो कैटेगरीज में अवार्ड देते हैं, एक फॉर द ट्रेडिशनल नॉट फॉर प्रॉफिट वर्क और एक सोशल एंटरप्राइज की स्पेस। तो उसमें एक अवार्ड होता है ऑफ ₹2 million each. It's kind of unconditional money. It's not we don't take any equity stake or there's no conditions attached to it. This is basically recognition of the work that whatever has been achieved. And in the process हम जो करते हैं, that's just one event that we do, closing event, because idea again ये होता है कि to bring in other stakeholders, जो कि for example donors or development sector specialists, उनके साथ exposure देना जो है वो is something of importance that we feel. So ratio would be, I guess, we incur about a couple of million more rupees compared to about 4-5 million rupees that we give in terms of award money. So you're saying that the value creation and the PR budget is actually a little bit more than. No, it's actually around half. I would say 40 to 60% of it. Yeah. Fantastic. That's not bad. Okay, brilliant. So this was very interesting. Akali, I just wanted to circle back to you for a couple of minutes. Do you want to share any specifics, maybe about investments that have taken place? And we can expand it to not outside investments, but even within the group, because the group is quite large. I know there was something around Engro Digital that you may want to comment on, or any others. Sure. So what we are, I think one person's mic is not on mute. Professor? Did you know I'm here? I'm not on mute. There's just a bit of feedback. So if you could just go on mute for 2 minutes, Faisal, and then we'll circle back to you. Yeah. So what we're really doing is, rather than look at individual pockets, as I mentioned, we're looking at where is the world going? Where is the future wealth? Where's the current wealth and future wealth going to be created? Which are the most resilient industries? And we have identified that it lies, everything circles back to artificial intelligence, machine learning, data sciences, the full stack for cloud computing, and cybersecurity. So DH at the moment has identified ways of organically growing teams to serve international markets. Great, thank you. I think we can then kind of go back to Faisal. I would ask you to please kind of give your comments on everything you've heard so far, and then we can enter the last kind of segment, which is very quickly, what is your vision going forward for the future? Thank you, Sadaf. This is giving me a great opportunity to talk to these corporates. बातें होती रहती हैं innovation को innovation करने की जरूरत है. Decide stock exchange में पैसे डालने हैं या मैंने इस business में पैसे डालने हैं, तो I step up and I say, now I'm here, right? I'm your big brother and I will help you. Please think a little beyond, right? जो why की हम बात करते हैं, innovation की बात करते हैं, इस economy को drive forward करने की बात करते हैं, fourth industrial wave की बात करते हैं, knowledge economy की बात करते हैं, corporates का बहुत बड़ा role है. आप अपने दरवाजे खोलें इन छोटे startups के लिए, छोटे businesses के लिए, इन innovators के लिए. इन सब में वो सारी skills नहीं है जो आपने acquire की है. मैं एंग्रो का अगर देखता हूँ, मैं एंग्रो का हिस्सा उस वक्त था. I'm going back right to 1986. Exxon Corporation उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी corporation थी. उसके settled SOPs थे, उसके settled methodologies थी, corporate structure था. उसमें बैठना बड़ा आसान था. आपको पता था कि मैंने ये करना है और ये नहीं करना. ठीक है ना, वहां तक था. अब जो है दुनिया को differently सोचने की जरूरत है. Exxon is not now, or let's say, in the top 10 in the world anymore, right?
टेक्नोलॉजी कंपनीज, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कंपनीज केम एंड टुक ओवर। हमें उस हिसाब से इसको देखने की जरूरत है। दे हैव अ लॉट ऑफ फ्री कैश। CSR का लफ्ज जो है ना वो कई दफा रैंकल करता है, क्योंकि हम उसको देखते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा जो है ना स्टोरी टेलिंग है, कि ऐसी कहानी पकड़ो एम्पावरमेंट की, ठीक है ना, इंक्लूजन की, कुछ स्कूल्स बना दो, वो कम्युनिटी को हेल्प कर दो, ठीक है ना। उसमें भी आप सोचें, जरा डिसरप्टिव सोचें। आप ये सोचें कि मैंने एक कम्युनिटी को नहीं, मैंने सिर्फ घर में नहीं काम करना, मैंने पूरे पाकिस्तान में काम करना, मेरा फुटप्रिंट पूरे पाकिस्तान पे जाना चाहिए। अगर मैं कोई ऐसी चीज करना चाह रहा हूँ जो कम्युनिटी बिल्डर हो, जो नेशन बिल्डिंग का काम करे, ठीक है, तो उस हिसाब से इसको सोचें। आई एम गोइंग टू बी अ लिटिल हार्ड, राइट, बिकॉज़ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू हैव दिस कन्वर्सेशन। देखिए वाई की बात जब होती है ना, तो NIC के पर्सपेक्टिव से, इंक्यूबेटर के पर्सपेक्टिव से हम हमेशा वाई को देख रहे होते हैं। स्मॉल एग्जांपल, हमने कराची में एक पार्टनर ढूंढना था NIC का, राइट, फॉर ए प्रोग्राम व्हिच वाज फोकस्ड ऑन अर्बन यूथ, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग के लिए। जो हमारा डोनर था, जो मैनेजर था, वो चाहता था कि हम एक मेजर यूनिवर्सिटी के साथ जाएं, बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ जाएं, IBA के साथ जाएं, हबीब के साथ जाएं। वी डिसाइडेड नहीं, हमने KSBL के साथ जाना। I took that decision, KSBL के साथ जाना। मेरा एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव था। वो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव ये था कि हमें दाऊद फाउंडेशन के साथ जो है एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, जिसका हमारे स्टार्टअप्स को सिर्फ मोमेंटरली फायदा नहीं होगा, तो लॉन्ग टर्म फायदा होगा, एक रिलेशनशिप बिल्ड होगी। अब KSBL से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि KSBL जो है, जो प्रोग्राम हमने रन किया, जो हमने कुछ नॉलेज ट्रांसफर की, वो उसको आगे लेके जाए, राइट। तो वो कैसे आगे लेके जाएंगे? दाऊद फाउंडेशन कैन हेल्प देम डू दैट, कि वो उसको कैस्केड करे इनटू टियर 2 सिटीज ऑफ सिंध, इफ नॉट बियॉन्ड दैट, राइट। सो ये है वाई, राइट। वाई इस तरह से देखने की जरूरत है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सोशल एंटरप्राइज का लव हम सुनते हैं, एक्चुअली NIC में हम उस लव को एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते हैं देयर इज नो सच थिंग एज अ सोशल एंटरप्राइज, देयर इज एन एंटरप्राइज विद सोशल इम्पैक्ट, राइट। उस हिसाब से सोचें, उस डायरेक्शन से सोचें कि मैंने बनानी एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उसका सोशल इम्पैक्ट उतना ही डीप होगा, राइट। बड़ी बड़ी आप कंपनीज देख लें, $1 बिलियन कंपनीज देख लें, आप एग्रो ही को देख लें, ठीक है ना, है तो बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन, राइट, इट्स वन ऑफ द टॉप कॉर्पोरेशंस ऑफ पाकिस्तान, बट एवरी टाइम, राइट, दे आर सेलिंग अ बैग ऑफ फर्टिलाइजर टू अ फार्मर, राइट, इट आल्सो क्रिएट्स सोशल इम्पैक्ट, क्योंकि उस फार्मर की लाइफ पे उसका इम्पैक्ट होता है, उसकी फैमिली पे इम्पैक्ट होता है, उसकी कम्युनिटी पे इम्पैक्ट होता है। नेशन की GDP में 18% की कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर की। हम चाहते हैं ये 18% से बहुत आगे जाए, राइट। उसी वक्त जाएगा जब ये लार्ज कॉर्पोरेट्स जो है ये इनोवेटिवली सोचेंगे और ये सोचेंगे कि हमने नेक्स्ट वेव जो है वो कहाँ से क्रिएट करनी है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग न्यू वेव्स, राइट। वो वेव्स जो है वो बहुत जरूरी है, और वेव्स क्रिएट करने के लिए या तो मून की ग्रेविटी है, ठीक है ना, कि वो टाइड्स क्रिएट करे और वो वेव्स उस हिसाब से उठे, या जो है आपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ डिसरप्शन करनी है टू सेट अप अ वेव, राइट। तो ये जरूर उस तरफ से सोचना है। पार्टनरशिप्स जो है हमारे पर्सपेक्टिव से वो उसी वक्त जो है वो कारआमद होंगी जब कॉर्पोरेट्स ये सोचना शुरू करेंगे कि हर चीज हम खुद नहीं कर सकते, हमारी इतनी एजिलिटी नहीं है। एक लार्ज कॉर्पोरेशन में एजिलिटी नहीं होती, ठीक है ना, उसको जो है वो देखना पड़ता है कि हम डिस्ट्रप्शन कहाँ से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे डिस्ट्रप्शन तो आप खुद डिस्ट्रप्ट होंगे। दुनिया भर में हुआ है, द मदर ऑफ ऑल पार्टनरशिप्स वाज एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM, राइट। उसको अगर आप देखें, जब बिल गेट्स और उसके साथ बॉल्बर, उसका तीसरा एलन, वो जब गए थे IBM से बात करने, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम बेचने गए थे, बट दे मैनेज टू रिटेन द राइट टू आल्सो सेल इट टू अदर्स। और वहां से फिर हम सुनते थे IBM क्लोन्स, राइट। हालांकि वो थे तो PCs, but they were known as IBM clones, right? That is the mother of all partnerships, and it changed the world, right? It put computing power in the hand of the ordinary people. Right? So ये इस तरह सोचने की जरूरत है। Why जो है ना उसको डिफाइन करें, रीडिफाइन करें, बल्कि डिफाइन नहीं रीडिफाइन करें। अब COVID-19, right? We all know that Pakistan has gone through a very difficult period and is likely to go through a very difficult period, right? आपके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको किक स्टार्ट करने की जरूरत होगी। द गवर्नमेंट इज पुटिंग आउट इंसेंटिव। अभी मैंने आई थिंक कल ही मैंने पढ़ा
that there's a very large incentive for farmers. I think 56 billion or somewhere around that number, जो उनको farmers को subsidy दी जाती है. Subsidies किस लिए दी जा रही है? Basically इसीलिए दी जा रही है ना कि आप पहिया जो है उसको घुमाएं. अब हमारा एक स्टार्टअप है जिसने अक्टूबर में लॉन्च किया अपना, वो एग्री साइड पे है. फैमिली बिजनेस था, ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस था, लाइट इंजीनियरिंग का. वो वॉशिंग मशीन्स बनाते थे. 30 साल पहले वो वॉशिंग मशीन्स बनाते थे, छोटी छोटी चीजें बनाते थे. फिर उन्होंने बीट थ्रैशर्स बनाने शुरू किए. अब जो लड़का है, जो सेकंड जनरेशन है, he decided कि जी मुझे ऑटोमेट करना है एग्री को, right? So we've been encouraging him. He launched his mini tractor and he launched his reaper binder in October last year, right? If you think about it, it's about 7 months only. इस दफा उसके पास बीट सीजन के लिए he had orders of about 55 million rupees, tractors and reaper binders. So he sold, and after he had sold them, right, and he had gone to the market, he had got them implemented, he came to see me again, right, during this COVID period. And he said, now I've understood, how to scale. Now I've understood the extent of the market, the size of the market. So I'm now going to focus myself on agri-automation. His next thing is a rice transplanter, then he's thinking other things. Right now he is focused. And he's saying, now I will need growth capital also, and I want to grow. So it's a very discussion. We can look for strategic partnerships also. We can look at where we get the money from, put it behind that. There is, in my mind, there is no such thing as a traditional business. The space. The business is the same. There is a new way of doing that business. And that is where the innovation comes in. And we expect these corporates, yes, the stock market is there, the equities are there, they give you good return, right? Real estate is there, that gives you good return, right? So think about it. Yes, do that. But a portion, even a small portion, even 1% of these large corporates, right, actually directed into the startup ecosystem will make a huge difference. Do not be afraid of failures. Doesn't matter how many out of 10 ventures, even if 9 fail, it doesn't matter, right? So you need to innovate, you need to step up, you need to redefine your why, and you need to intervene in this ecosystem. हम सब कहते हैं कि nascent ecosystem है, लेकिन अगर जो stakeholders हैं, जो key stakeholders हैं, वो move नहीं करेंगे, वो innovate नहीं करेंगे, तो ये nascent ही रहेगा, right? Money is available, but money is not accessible. Right? That is the big availability and accessibility are two different things. Right? उस हिसाब से उसको सोचने की जरूरत है. What a fantastic vision for the future, and a very impassioned plea, I think, to the corporates to help develop this space a little bit more. Mariam, from the startup perspective, what is your vision for the future, and how do you think this is going to get impacted by perhaps COVID or any policy changes you would like brought about? So I was looking at the chat box and I was replying back to a similar question. We need to go back to new normalcy. When I say new normalcy, I just read what Dr. Yunus from Praveen Bank wrote the other day. He was talking about a new social and economic fabric. I hope we do not want to step into a world where it's the same rudder, the same chat, the same brand. And for that, I think it's a great opportunity for startups who feel that their work has come to a halt to take a step back and reflect on what is not happening and how they can improve their processes. And if they need to pivot. I also really liked what Faisal, he touched base upon that, everybody needs to be more active when it comes to in terms of investments. But having said that, यहाँ पे मैं 2 बातें बहुत important करना चाहती हूँ. शायद काफी startups को बात अच्छी ना लगे. When you come out in the market, अगर आप एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक एनपीओ नहीं है और आपका मॉडल ऐसा है, तो आपके पास एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए. और पार्टनरशिप्स उस चीज को स्ट्रेंथन करती हैं, उसमें एड करती हैं. अगर आपका मॉडल जो है जहाँ पे आपकी इनिशियली आपकी हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जैसे आपका हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जहाँ पे आपको इनिशियली हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है या कोई रिसर्च नहीं है, तो I strongly believe that identifying the right key players in the industry is not hard. Everything is just a click away. So because I saw in the thread of comments कि हमें नहीं पता किसके साथ connect करना है. I think one big problem is that we don't ask.
I wouldn't ask people in my circle. I will hesitate. मुझे कभी जवाब नहीं मिलेगा. I have to go out. I have to make an effort. I have to ask people around me. I have to be active even in the incubation centers where I am at. Like, ask my colleagues or peers or even the people running the incubation center who I can be connected with. And then if nobody's connecting you, then that is a problem that needs to be addressed. There are both, and talking about opportunities apart from strategic partnerships, investment की अगर हम बात करें तो investors आपको locally भी मिलेंगे और आपको international investors भी मिलेंगे, आपको social space में भी मिलेंगे because social entrepreneurship is also on the rise. And I hope it grows by leaps and bounds. And आपको generally भी मिलेंगे. So there are multitude opportunities, plenty of opportunities. You just have to have, blind ears, accept criticism, and grow as a company, grow as a person. Thank you so much. So Mariam's plea to other startups is to pull up your socks and do your homework. And not have a sense of entitlement to be a passive recipient of other people to help you. You have to get out there and take charge. Ghalia and Fawad, given we were short on time, thank you all so much for your continued patience. But I would ask either one of you, or you can go in whatever order you prefer, is there any hope from startups to get investment as Faisal has, hoped for in his vision? They're high risk. Do you see a path to your organizations investing in innovation and startups? I'll go first. If they can answer a question 7 times, it's the same question. Question is, why should we do this? 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 Why? If they can answer why 7 times, then there's no force on earth that can stop you from getting an investment. So I'll add to it that strategically, yes, because corporations they need solutions. They're looking for innovations. They need new ways of thinking, and that startups is the perfect place to where one would expect these kind of solutions to come from. We just need to build the right structures. We need to understand each other. We need to communicate with each other more. I think it is inevitable. Okay, fantastic. And so I would now like to close this fantastic discussion. Thank you all for your time. Some key trends that we've seen is corporations little conservative, a little unsure of high-risk investments in nascent-stage startups, but still understanding that there is a lot of strategic value in the innovation, in the grassroots level knowledge that startups could perhaps bring. But at the same time, on the flip side, it is an industry that is in its nascent stages, needs a lot of investment, and perhaps capacity building from the side of the founders and startup personnel themselves. So thank you all so much. Really appreciate your time, and over and out. Thank you so much everyone for coming. Ghalia, Fawad, Mariam and Sadaf. I think it went really well. आपने आखिर में पोल का रिजल्ट तो देख ही लिया होगा. मरियम, काफी मुझे एक्चुअली इस बात से काफी अच्छा लगा कि काफी कम लोगों ने कहा कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आगे से वो काफी आई गेस 5% लोग थे. हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा थे जो कि आप कह लें कि और ये जनरली भी है, चीजों को ना ढूंढने का जो एक रिवाज है वो हम भी उससे जर्नलिस्ट स्टार्टअप्स को काफी इंकरेज करते हैं और हमें आगे भी जो भी ऑडियंस है उन्हें उनसे दोबारा एक दरखास्त होगी, प्लीज अपनी वर्टिकल्स में जाएं, सारी कॉर्पोरेट्स को ढूंढिए, खुद ही स्कैन कीजिए. ये लोग आके 1.5 घंटा आपके अपने वक्त में से निकाल के आपको सिर्फ ये बताने आए कि दे आर ओपन टू इट और व्हाट आर अदर अपॉर्चुनिटीज, लेकिन आखिर में अपने स्टार्टअप की जो पर्टिकुलर चीजें वो करनी आपनी है. वी हैव गॉट 2 ग्रेट सेशंस आज. इसके बाद हमारा कोई सेशन नहीं, एक छोटी सी मैं अनाउंसमेंट कर लूं, देन वी आर ऑफ. वी हैव गॉट 2 ग्रेट सेशंस टुमारो. पहला सेशन है हाउ टू बिल्ड नैरेटिव एंड एस्टैब्लिश अ ब्रांड. उसमें हमारे पास 4 लोग हैं. एक तो जुनैद अजीज हैं जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं, वहाँ पे
यही पढ़ाते हैं, ब्रांडिंग को पढ़ाते हैं। पहले रोलेक्स में थे, उससे पहले डॉन में थे, ब्रांड को देखते थे, रोलेक्स के ब्रांड को देखते थे। उसके बाद हमारे पास हमारे साथ होंगे उमर, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स के मेरे ख्याल में सबने काफी उनका सुना ही होगा या उनके कंज्यूमर रहे होंगे। सो हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड फ्रॉम प्रोडक्ट व्हिच इज अ लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट। So I just requested him this morning to be with us. उसके अलावा हमारे पास सैयद दलाल बन्नी है। दलाल को अगर आप लोग नहीं जानते तो दलाल ने ट्रेवली शुरू किया था और उसके बाद करीम he was for a very long time he was working with Kareem to look at their brand। और उसके बाद हमारे पास फैसल साहब हैं जो कि जिनका एक आज आपने उनका इंट्रोडक्शन सुन लिया होगा, अगर पहले नहीं सुना तो he has spent a lot of time in doing advertising and branding। शाम को जो हमारा सेशन है स्टोरी टेलिंग so the title of session is content marketing, how storytelling that moves people। उसमें we have got again I requested Junaid to be in both sessions, so he has kindly accepted my request to be in both sessions। So other than him, Wahab Ghaznavi from New York University, he teaches at New York University pretty much the same thing। उसके अलावा हमारे साथ ज़ारा शाहजहान होंगी, शायद क्लोथिंग ब्रांड आपने उनका आई एम श्योर के सुना होगा। इसके अलावा हमारे साथ असदुल हक होंगे। अगर इस पैनल में कोई आई एम श्योर के सबको फैसल साहब, व्हाट वाज द वीडियो, आई मीन आई फॉरगॉट कि वो किस कंपनी के लिए बनाई गई थी, रिदम्स ऑफ यूनिटी। It was done 20 years ago। Can you repeat that question? असदुल हक का जो 20 साल पहले एक प्रोजेक्ट था जो रिदम्स ऑफ यूनिटी था। Asad actually started his career with me in Interflow। He was a very young guy. He joined our audiovisual department and he started to learn from there। Then he started his own company called Ambiance। और इनका जो सबसे known उस वक्त कमर्शियल था वो रिदम्स ऑफ यूनिटी था, जो मॉर्गन के लिए उस वक्त, क्योंकि टोबैको ब्रांड्स जो है एडवर्टाइज हो सकते थे, तो बहुत ही खूबसूरत वो एक कमर्शियल है रिदम्स ऑफ यूनिटी, बहुत से लोगों को याद है। So it was actually telling a story, right? It was telling a story of the 4 provinces of Pakistan in the form of a dance performance, right? So Asad since then has managed many brands। He's an A-list director who makes commercials। He's managed a lot of products। He's done the story for a lot of brands। So Asad is very, very exciting, right? He's a biker also, so that is another part of him, that he's a very committed biker। सारी चीजें करता रहता है। He's a very interesting guy। Zara is a very interesting person। She's built her brand right through storytelling and content marketing। Wahab Ghaznavi, besides teaching at NYU, Wahab is one of the first people who started media planning and media buying in Pakistan, right? Again, it goes back to 1997, right? So तकरीबन आप देख लीजिए 23 साल पहले। Then Wahab went off to Lebanon, वहाँ से फिर वो न्यूयॉर्क गए और वो बहुत बड़ी कंपनीज में काम कर चुके हैं, on 5th Avenue, on very large companies like Carrot, and he's been innovating। So he knows consumer behavior, right, and how to construct a story। Ethnography, right, कि आप एक कस्टमर का एक दिन लेके उससे कैसे एक ब्रांड की स्टोरी बना सकते हैं। So these are the panelists tomorrow। We're also most likely to get Faisal Qureshi। Faisal is a very interesting person। उसने अपना कंपनी लॉन्च की थी, उसके बाद उसने बहुत एक बैंड बना था डॉक्टर और बिल्ला, राइट? उन्होंने काफी स्टोरी टेलिंग की थी म्यूजिक में, और उसके बाद फैसल ने फिर बहुत ज्यादा काम किया। NTM में मैंने उसके साथ काम किया था। He had made sitcom for us called Unanchu Man, right? So it was the hero anti-hero, right? A hero who can't fly। So Faisal does very interesting stuff। उसने यूफोन के लिए बड़ी अच्छी कैंपेन एक बनाई थी। So I'm asking Faisal to join us। He's got to confirm to us उसकी availability है। इसके अलावा शायद हमें ज्वाइन करें काशिफा फंदी। So somehow मुझे लोग अपनी नॉस्टैल्जिक मेमोरी से ज्यादा आजकल याद रहते हैं। So अनारकली सॉन्ग, अगर किसी ने, शोएब मंसूर का एक सॉन्ग था अर्ली आई गेस 2007 की बात है। So Kashif was one of the team members in that song। So yeah, I mean, so we will be having very interesting sessions, panels tomorrow, and that is not enough। Actually, we have Faisal Saab and I am still trying to get more and more interesting people in those panels। We want to
keep panels to certain limit, but we want to make sure कि आपके लिए काफी interesting, different उसमें diversity भी आए. So thank you very much everyone. Thank you this panel once again for taking out time. I hope it must have given a lot of insights. So आखिर में हमारे broadcasting partners Patari Pakistan Startup Group on Facebook. Agar if you have missed this video is available on our Facebook page and on our partners pages as well. So thank you once again, Ji. We'll see you tomorrow, Ji. Khuda Hafiz for now.